हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर टेक्साज यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपसे सभी तरह के लीगल, फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर्स पे बात करते हैं। तो वेलकम टू अ न्यू सेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट लीगल आंसर राइटिंग, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्लेन। कंप्लेन के बारे में हम जानेंगे, होता क्या है, कैसे इस पे आंसर लिखते हैं एंड ऑल। दिस इज कवर्ड इन सेक्शन 2D ऑफ CRPC। CRPC के सेक्शन 2D में आता है। इसके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेन? एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स। स्टेट द प्रोसीजर दैट अ मैजिस्ट्रेट शैल फॉलो व्हेन अ कंप्लेन इज मेड टू हिम। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंप्लेन एंड FIR। तो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ कंप्लेन। जेनरिक टर्म है कंप्लेन, सभी जानते हैं हम लोग, बट इसकी लीगल प्रोस्पेक्टिव राइटिंग क्या होगी वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। कोई भी सेक्शन, आप कोई भी लॉ उठा लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, अनसिट्राल का भी लॉ उठा लो, IPC, CPC, CRPC, सबका डेफिनेशन जो है वो ऑलवेज सेक्शन 2 में ही होता है। ठीक है, तो जब भी कहीं आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो बेझिझक आपको सेक्शन याद होना हो, आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो आप देखिएगा वहाँ पे उसका डेफिनेशन ही होगा। तो according to section 2D, complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense, but does not include a police report. Complaint में police report नहीं आएगी, and police report always includes FIR and GD, where FIR is first information report and GD is general diary. ठीक है? It is to be noted that the purpose of a complaint is to enable the magistrate to take action under this code. Complaint का main purpose क्या है? कि magistrate को enable करने के लिए कोई action लेना। Practical sense में अगर मैं आपको कहूँ तो there are situations जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस आपकी कंप्लेन लेने से मना कर देती। आप चाहे तो अपने एरिया के MLA के खिलाफ या MP के खिलाफ जाएं कंप्लेन करने। MLA MP छोड़ दीजिए, आप किसी काउंसलर के खिलाफ कंप्लेन करने जाइए, आप एक दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करने जाइए, आपके संग ट्रैफिक वाले ने गलत किया, बदतमीजी किया, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, वो लोग नहीं लेंगे। दैट्स व्हेन जुडिशरी कम्स इनटू प्लेस। आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, कंप्लेन दर्ज करेंगे, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद तो पुलिस वाले दौड़ के आपका काम करेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो। अ कंप्लेन इम्प्लाइज दैट सम पर्सन, वेदर नोन और अननोन, हैज कमिटेड एन ऑफेंस। कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये तो थंब रूल है। कंप्लेन नोन के खिलाफ भी हो सकता है, अननोन के खिलाफ भी हो सकता है। अगर मेरे पड़ोसी ने मेरे संग कुछ गलत किया तो ही इज नोन टू मी, उसके नाम दे के मैं कंप्लेन करूंगा। लेकिन मैं रास्ते पे चल रहा था, कोई मेरा फ़ोन छीन के भाग गया, तो फ़ोन छीन के भागते वक्त उसने मुझे अपना आधार कार्ड नहीं शो किया, राइट? तो ही इज़ ऑलवेज अननोन। आप न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें आप सुनते होंगे कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। दिस इज द सेम थिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be a complaint. The police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant. ठीक है? Essentials of a complaint. इसके बारे में पढ़ते हैं. There are various points in it. The following are the essentials of a complaint. It is an allegation which may be made orally or in writing. It may not set out the facts on which it may be made orally or in writing. It may not set out the facts on which the accused is to be charged. It must contain a statement of facts which are relied on as constituting offense. जो कंप्लेन होता है, कंप्लेन में सेक्शंस नहीं होते हैं, उनका फैसला का वो नहीं दिया जाता है कि इसने मेरे मोबाइल चुराई तो उससे मुझे 50,000 रुपये चाहिए, या फिर जज को उसे फांसी की सजा सुनानी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्लेन इज द डिपिक्शन ऑफ फैक्चुअल थिंग्स। जो आपके संग घटित घटना है उसका फैक्चुअल सिनेरियो आप बयां करोगे। That's it. The allegation must be that some person, known or unknown, has committed an offense. It is not necessary that a particular offense alleged to have been committed must be stated.
It may not mention the particular section of the statute under which the offense has been committed, but mentioning of a wrong section does not vitiate the character. हम कंप्लेन करते वक्त लॉ और कानून के हिसाब से सेक्शन नहीं लिखाते हैं कि मॉनेटरी फ्रॉड किया तो सेक्शन 420 के अंदर मामला दर्ज करो, ऐसा नहीं होता है. भाई चोरी हुई है, भाई उसने ठगी करी है, दैट्स इट, दैट सफाइसेस द सिचुएशन. पॉइंट 3 देखते हैं. अ कंप्लेन मस्ट बी मेड टू मैजिस्ट्रेट. A police officer is not a magistrate, and as such a petitioner or information sent to a police officer is not a complaint. Factual clear है. It must be made with a view that the magistrate should take action under the code. A mere statement to a magistrate by way of information without any intention of asking him to take action is not a complaint. मैं गया, मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बोला, मजिस्ट्रेट साहब मेरी बगल वाले खेत में एक बकरी थी, वो अब नहीं है. मजिस्ट्रेट साहब सुने, बोले हाँ फिर. मतलब बस हमको बता रहा है कि आज बकरी नहीं है, ये कंप्लेन नहीं होगा. मैं बोलूँगा मेरी बकरी नहीं है, मेरी बकरी पड़ोसी ने चोरी की, पड़ोसी को बोलिए या तो मुझे वैसे ही एक बकरी ला के दे, नहीं तो मुझे 2000 रुपये कैश दे दे, ये हुआ कंप्लेन. 5th point, it is not necessary that a complaint should be made by the aggrieved person. It may be made by any person aware of the offence. It is not necessary that the person making a complaint must have personal knowledge of the fact constituting the offence. The word complaint has a very wide meaning. No particular form is prescribed in which a complaint is to be made. जरूरी नहीं है कि parties to a event ही complain करें. Third person भी complain कर सकता है. It is to be noted that a complaint is constituted of the allegation of the fact relating to the commission of an offence. Allegation that do not amount to an offence would not be a complaint. Chabilal Gurung versus Krishna 1984. A complaint may be sent by post or by telegram. It was held in R. Ramakrishnan versus Station House Officer that where the offence mentioned under section 151 subsection 1 VG of the code could be taken cognizance of only on a complaint in writing of that court or some other court to which that court is subordinate. A police report could not be treated as a complaint. अब देखते हैं complaint to magistrate. Section 200 of CRPC provides the preliminary procedure which a magistrate shall follow on receiving a complaint. Under this section, it is obligatory to examine the complainant and the witness, and a summary dismissal without examining them is not legal. Examination of complaint. According to Section 200, a magistrate taking cognizance of an offence on the complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses, and also by the magistrate, provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witness. If a public servant acting on purporting to act in the discharge of his official duties, court has made the complaint. If the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192, provided further that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 192, after examining the complainant and the witnesses, the latter magistrate need not re-examine them. Procedure by magistrate not competent to take cognizance of the case. According to section 201, if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. If the complaint is not in writing, direct the complainant to proper. अगर कोई magistrate के पास आप complaint करते हैं, who is not capable of taking in the action, वो writing में है तो वो आपको writing में ही revert कर देगा कि इसको इस कोर्ट ले जाएं, यहाँ जाके इसका proper फैसला होगा. या फिर अगर writing में नहीं है तो आपको बता देगा कि यहाँ आपको जाना है. इट इज क्वाइट क्लियर. केस लॉ एक देख लेते हैं. इन राजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1989 पटना का केस है. The court acquitted the accused on the ground that it had no jurisdiction to take cognizance of the complaint. It was held that the order of acquittal was illegal because the court ought to have returned the complaint for presentation to the proper court instead of acquitting the accused. Postponement of issue of process. According to section 202, any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is a sufficient ground for proceeding, provided that no such direction for investigation shall be made where it appears to be the magistrate that the offence complaint is a triable exclusively by the court of session, or where the complaint has not been made by a court unless the complainant
and the witnesses present, if any, have been examined on oath under section 200. In an inquiry under subsection 1, the magistrate may, if he thinks fit, take evidence of witnesses on oath, provided that if it appears to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. Third point, if an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this court on an officer in charge of a police station except the power to arrest without warrant. अब देख लेते हैं सेक्शन 202 का ऑब्जेक्ट क्या क्या दिया गया है. The object of section 202 is threefold. इन अलग पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन, टू ascertain the facts constituting the offence. ऑफेंस का फैक्ट्स पहले जानेंगे. फिर आएंगे टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट एंड हरासमेंट टू द एक्यूज्ड. क्लियर है. थर्ड पॉइंट, टू हेल्प द magistrate to judge if there's sufficient ground calling for investigation and for proceeding with the case. अगर पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिया है फर्स्ट स्टेज में, तो इसका हमेशा मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले की ही गलती है या फिर ही इज वर्किंग इन अनड्यू प्रेशर. अभी हाल में ही एक अमेजोन पे या नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई है, विर्थी मल्होत्रा नहीं, सानिया मल्होत्रा शायद, दंगल वाली लड़की, उसका है OTT पे है, वेब सीरीज आया है कटहल. उसका थीम यह है कि एक MLA साहब का कटहल चोरी हो जाता है और वो उसका रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर पूरा पुलिस वाला उसके पीछे बावड़ा हो जाता है. तो ये तो कंप्लेन नहीं लेना चाहिए था ना. खैर, द टॉपिक इज सेम कि पुलिस वाले नहीं लिया तो कोई रीजन और भी हो सकता है पुलिस वाले बोनाफाइड वे में काम कर रहे हैं एंड योर केस इज नॉट मेंटेनेबल. सेम केस मजिस्ट्रेट के साथ भी होगा. सो टू हेल्प द मजिस्ट्रेट टू जज if there is sufficient ground calling for the investigation and for proceeding with the case. कि केस लेना है या नहीं लेना है. The object of the provision of section 202 is to enable the magistrate to form an opinion as to whether process should be issued or not. At that stage, the magistrate has to see whether there is evidence in support of the allegation made in the complaint and not whether the evidence is sufficient to warrant a conviction. The function of the magistrate holding a preliminary inquiry is only to be satisfied that a prima facie case is made out against the accused on the material placed before him by the complainant. The magistrate under section 202 can therefore postpone issue of process against accused till receipt of report by OLS. Dr. B.S.G. Bedi versus State of Maharashtra 1977 का केस है. ठीक है, आगे चलते हैं. Scope of inquiry under section 200. The scope of inquiry under this section is extremely limited only to the ascertainment of the truth or falsehood of the allegation made in the complaint on the materials placed by the complainant before the court for the limited purpose of finding out whether a prima facie case for the issue of process has been made out and for deciding the question purely from the point of view of the complaint without at all adverting to any defense that the accused may have. In fact, in proceeding under this section, the accused has got absolutely no locus stand and is not entitled to be heard on the question whether the process should be issued against him or not. Nagawa versus Viran 1947 का केस है ये. Dismissal of complaint देखते हैं. According to section 203, if after considering the statement on oath, if any, of the complainant and of the witnesses and the result of the inquiry or investigation, if any, under section 202, the magistrate is of the opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reason for so doing. Issue of process क्या होगा? Section 204 बात करता है. In this opinion of in the opinion of a magistrate taking cognizance of an offence, there is sufficient ground for proceeding and the case appear to be a summon case, he shall issue his summons for the attendance of the accused. A warrant case, he may issue a warrant, or if he thinks fit, a summon for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such magistrate, or if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction. No summons or warrant shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of prosecution witness has been filed. Point 3. In a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summon or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint. Point 4. When by any law for the time being in force any process fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint. Nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of section 87, which empowers the magistrate to issue a warrant
in lieu or in addition to a summons. Distinction between a complaint and FIR. In a complaint, the allegation is made orally or in writing to a magistrate, whereas the FIR is given to officer in charge of a police station. FIR सिर्फ पुलिस स्टेशन में हो सकता है और कंप्लेन बल्कि मैजिस्ट्रेट के पास भी हो सकता है. A complaint may relate to a cognizable or non-cognizable offence, whereas a first information report must relate to a cognizable offence on the face of it. A magistrate takes cognizance of an offence on a complaint made to him, but he cannot do so on a FIR. A complaint does not include the report of a police officer. A first information of an offence may be given by anybody including a police officer. So this was all. I hope you have liked the video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. See you in the next video. Thank you.